One of the biggest challenges the people of Pakistan Occupied Kashmir or POK face is travel. The monsoon rains bring untold hardships, including frequent landslides and damage, whatever little infrastructure exists. The mindless exploitation of the ecologically fragile region by lumberjacks from Pakistan has denuded the hills and mountain slopes. This has led to increased landslides during the floods. With no help coming their way, locals are left with no option but to risk their lives on the rocky roads. The recent bus accident at Chinari that killed several passengers is an example of government's apathy. Locals say vehicles have plunged into the river several times in the past too. अवाम इलाका की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी कि खुदारा जो है ना इस चीज़ को, क्योंकि कीमती जानों का ज़ाय एक इंसान का जो है ना इस दुनिया से चले जाना समझे पूरी नस्ल इंसानियत का जो है ना ये तो अल्लाह के सामने वो लोग कातिल हैं जो इन चीज़ों को केयर नहीं करते. Over 73,000 people were killed and 3.5 million were rendered homeless when an earthquake devastated the Himalayan region in October 2005. Much of the billions that poured in as aid was siphoned off by corrupt Pakistani officials and politicians. The reconstruction work was abandoned after aid workers left. आज भी मेरे ख्याल में 7 साल गुजरने के बावजूद रोड तकरीबन वही पोजीशन है जो आफ्टर अर्थक्वेक थी. ये इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक बात है कि इधर किसी की तवज्जो नहीं आ. The unprecedented floods of August 2010 had also washed away miles of motorable roads. More than 2 years later, most of it is yet to be repaired. Accidents are common and many die every year. Many more are maimed for life. ज़लज़ले के फ़ौरन बाद तकरीबन 2-3 माह के बाद जब आर्मी ने ये रोड बनाई थी उस वक़्त भी यहाँ पे एक संगीन हादसा हुआ था जिसके अंदर 36 अफराद लोकमा अजल हुए थे और इसी जगह पे हुआ था. और उस वक्त से आज तक हम महकमा PWD वालों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अखबारात के ज़रिए, पर्सनली जाके और एप्लीकेशन के ज़रिए, लेकिन इस तरफ किसी ने आज तक वजह नहीं दी है और आज ये फिर दोबारा वो हादसा रूनुमा हुआ. Locals allege the government does not act even when accidents occur. कोई सरकारी अदारा यहाँ पे जो है एक्टिवेट नहीं है. लोगों ने पर्सनली रेस्क्यू किया है और किसी भी किस्म की सरकारी असेसमेंट यहाँ पे नहीं है. पुलिस महकमा पुलिस वाले सिर्फ और सिर्फ 2 बंदा नीचे से ऊपर आ रहा है उसका नाम लिखने और यही सब की एक्टिविटी. Pakistan, which has illegally occupied the remote region for over 6 decades now, has been touting it as Azad or Free Kashmir. Every 5 years, it goes through the charade of holding elections here to show that there is a semblance of democracy. But in reality, there is no democracy in POK. Those contesting elections have to sign an affidavit swearing allegiance to Kashmir's accession to Pakistan. The POK government is powerless, as all crucial matters are decided by the 13-member Kashmir Council headed by the Pakistani Prime Minister. The council is filled with nominees from the Islamic nation's political parties.